Bilal, let us try to solve this question. The time allotted for this question is 1 minute. Please give me the answer first. I want the answer from everyone first. से करेंगे क्वेश्चन को. The question is saying this is a very simple question. Angle OAB is given to me as 30 degree. तो आप जानते हो बेटा angle OAB is equal to 30 degree and OA will be equal to OB. So my dear friend, this angle will also be equal to 30 degree. ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर. तो अब जब ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया तो एंगल AOB will be equal to 120 degree. एंगल AOB will be equal to सर 120. सर शुरू से एक और बार समझ सकते हैं? एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो सर एंगल बी 30 कैसा है? बेटा? बेटा डांट खाओगे क्या? डांट खाओगे? थोड़ी सी खा लो, थोड़ी सी डांट खा लो. पिछली क्लास में थे? यस सर. पिछली क्लास में थे? उसके पिछली क्लास में? ऐसे मत हाँ करो सर. बेटा, ऐसे मत करो बेटा. ट्रायंगल AOB is an isosceles triangle. Why it is an isosceles triangle? Because OA will be equal अच्छा to हाँ OB. सर, वो रेडियस है. Why it is an isosceles triangle? Because OA is equal to OB. And why OA is equal to OB? Because they are the radius of the triangle. Just a minute, huh? Just a minute. So why OA is equal to OB? Because they are the radius of the triangle. So if they are the radius of the triangle, so this angle will become 30 degree. तो Why? रेडियस ऑफ द सर्कल. Sorry, radius of the circle. I'm sorry. So this angle will be equal to 30 degree. Radius of the triangle is in itself a very absurd term. जब आप radius of the triangle बोल रहे हैं तो आपको specify करना पड़ेगा which radius. So this was in itself a very absurd term. Wait a minute. Let me explain the question. So this angle OAB is equal to angle OBA will be equal to 30 degree. पहली चीज. दूसरी चीज my dear friend, ये एंगल अब मेरे को क्या निकालना है? एंगल BOC निकालना और एंगल AOC निकालना है. ठीक है, तो नाउ आई नो दैट एंगल AOB will be equal to 120 degree. ये मेरे को पता है कि this angle will be equal to 120 degree. Now what I have to calculate is, see, OC is equal to will be equal to OB. The reason I'm not going to tell you. Therefore angle OCB will be equal to angle OBC will be equal to 57 degree. ठीक है, so angle BOC will be equal to 180 degree minus 2 times of 57 degree, which is equal to nothing but 66 degree. हाँ, which is equal to 66 degree. तो ये वाला एंगल मेरे को 66 डिग्री मिला, ये वाला एंगल 120 डिग्री मिला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी नथिंग बट 54 डिग्री. So angle AOC will be equal to 54 degree and angle BOC will be equal to 66 degree. अब आप बताइए आप क्या बोल रहे थे? सर हमें पता कैसे चला कि वो रेडियस है, मतलब मिड पॉइंट है? वो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है. सेंटर बोलना चाह रहा है. आप सेंटर बोलना चाह रहे हो. सी practical, ideally this should be written in this question कि O is the center of this circle, but this is not written. This is not written, so this is something which is wrong. This is something which is wrong, and I'm taking my words back that I scolded you कि why you are not able to understand this. I'm taking my words back. This should be mentioned in the question. This question has been directly lifted from your book. So this should be mentioned there that O is the radius of the circle. I mean O is the center of the circle. में तो दिया इन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ. नहीं तो here मेरे पास नहीं दिया हुआ है. So O is not the center of the O नहीं दिया हुआ है, तो that is a mistake here. और अगर वो नहीं दिया होगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. I extremely apologize for my scoldings. ठीक है, so O has नहीं see देखो बेटा, I don't have any problem in apologizing where I am wrong. If I am not wrong, then I won't apologize. But here I was wrong.
Here I was really wrong because I assumed that this is written here. That was my mistake. Okay, chalo, let us move further to the next question. Okay, now this question is AOB is the diameter of the circle. By AOB जो है वो circle का diameter है and O will be the center of the circle. ठीक है, अगर इस type के question में see your friend has raised a very good issue. ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कहीं पे ना दिया हो और हमें वहां पे एज्यूम करना पड़े. तो अगर ऐसा एज्यूम करना, मान लो उतना ही क्वेश्चन आ जाता आपके एग्जाम में कि और आपको आंसर देना होता, तो और कोई आंसर करेक्ट बैठ ही नहीं सकता. इस क्वेश्चन को और किसी मेथड से सॉल्व ही नहीं किया जा सकता अनलेस आप ये मान लो कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो कहीं कहीं पे आपको एजम्पशन करना पड़ेगा. दैट एजम्पशन यू कैन डू, नो हार्म इन इट, कर सकते हो. Now this is a very interesting question. In the figure, AOB is the diameter of the circle. CD, E are any 3 points on the semicircle. You have to find the value of angle ACD plus angle BED. एंगल ACD की और एंगल BED की वैल्यू आपको पता करनी है. The time allotted for this question is just 1 minute or maybe 2 minutes. Try the question and tell me the answer. So I can say that ACDE is a cyclic quadrilateral. Now when this ACDE is a cyclic quadrilateral, in that it will mean that angle ACD plus angle AED will be equal to 180 degrees, and now it will be angle ACD plus angle AED plus angle AEB will be equal to 90 degrees plus 180 degree, which is nothing but 270 degree. So I can say angle ACD plus angle BED will be equal to 90 degree plus 180 degree, which is nothing but 270 degree. So this will be equal to 90 degree plus 180 degree, which is equal to nothing but 270 degree. Fine. So this is how you have to take the solve this question. This was the previous question that your friend was asking. This was the previous question that your friend was asking. क्या doubt था बेटा इसमें, देख लीजिए, पूछ लो. सर उसमें आप बता रहे थे कि इसमें नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर. इसमें आपने बोला था जॉइन AD एंड BD, तो सर उसमें वैसे कैसे उससे होगा? नहीं होगा, उससे नहीं होगा. that was just the various random thoughts that can come to your mind. That was just Okay. the various random thoughts that can come. सर हम लोग BCDEB को भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता सकते हैं ना, अगर हम लोग C और B को ज्वाइन कर दे तो. कर सकते हो, लेकिन फिर हाँ, again that by that way also you can do it. Either you can तो join सिमिलरली ऐसे हो AE, जाएगा सर. either you can join AE or you can join BC. Either you can join AE or you can join BC. Okay. Chalo. The next question is this one, and the question is, a circle has a radius of √2 centimeter. It is divided into two segments by a chord of length 2 centimeter. Prove that the angle subtended by chord at any point on the major segment is 45 degree. Just take the screenshot of this question. I will just pause your recording. I will just pause the screen. मैंने क्या किया, द क्वेश्चन इज सेइंग कि AB इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है. बहुत अच्छी बात है सर. अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि एक पॉइंट लिया है इस सर्कल में इन द मेजर आर्क, इन द मेजर सेगमेंट, और मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल APB इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, कर देते हैं प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, O से please keep quiet, please keep quiet.
Please keep quiet while I'm explaining the question. Please keep quiet while I'm explaining the question. First of all, what we will do, I will draw a perpendicular from O to AB, and that perpendicular will bisect AB. एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर पे अगर हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो it will always bisect the chord. So this AE, this OE will bisect AB. AB की लेंथ मुझे 2 यूनिट्स दी हुई थी, so this length will be equal to 1 unit, and again this will be perpendicular, and I can by application of Pythagoras theorem I can say that OE will be equal to OE square will be equal to root 2 whole square minus 1 square, which is nothing but 1. So OE will be equal to 1. जब OE मेरा 1 आ गया, that means my dear friend, this is a right angle triangle. This is a right angle triangle in which the two sides are equal. So this angle AOE will be equal to 45 degree. Similarly, I can say that angle BOE is also equal to 45 degree, and angle PAPB will be equal to half of 45 degree plus 45 degree, which is nothing but 45 degree. So angle APB is equal to 45 degree. ठीक है? ठीक है? Come on, say yes or no. Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. If anybody of you has any doubt, please ask. क्या किया, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्या क्या गड़बड़ हो गई, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. Because your yes is not convincing this time. किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो let us move further. The next question is this one. Now you have to solve this question. You have to give me the value. You have to give me the value of B and A, and I am being given one condition here that B is equal to 2A. अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते वक्त ये मत बोलना, ये मत समझने की कोशिश करना कि सर can I say that this AB is the diameter of the circle? No. नहीं दिया हुआ है तो नहीं है, और ऐसा नहीं है कि दिया हुआ था और मेरे पास नहीं है, नहीं दिया हुआ है ये. So AB is not the diameter of the circle. So your time starts now. So what this question was, I have to tell the value of A and B. जहाँ पे मेरे को एक condition दी हुई है, the condition is B is equal to 2A. Further, I am being given some condition. Now this is a very beautiful question because it utilizes all the concepts. कौन कौन से concepts हैं? एक कंसेप्ट जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला, वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है. दूसरा कंसेप्ट जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, वो कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है. और तीसरा कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी अभी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, दैट इज आल्सो वी आर यूजिंग हियर. सी, नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री. So this angle will also be equal to 30 degree. क्यों सर? क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है. अब let me erase something for me. Now this angle is 30 degree, so this angle will also be equal to 30 degree, and angle this one, angle ADC is the exterior angle for this wala triangle. So this angle will be 30 degree plus B. Similarly, my dear friend, this angle will be the exterior angle for this wala triangle. So angle ABC will be equal to 30 degree plus A. Now I know that ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. So angle B plus angle D will be equal to 180 degree. That will give me 30 degree plus A plus 30 degree plus B will be equal to 180 degree, or 3A will be equal to 120 degree, A will be equal to 40 degree,
B will be equal to 80 degree. क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, मार्क्स लो, आगे बढ़ो, सिलेक्शन लो, बस खत्म। यही तो करना था, और क्या करना था बताओ? Thank you, sir. Was there anything that was different and which was required to be done in this question? Why I am telling No, you sir. Thank you, all the sir. questions, यही क्वेश्चन का आंसर चाहिए। why I have dedicated this full class for this discussion, because I want to tell you, my dear friends, that the questions are not tough. The questions are not tough. The questions are little bit different. Those who have attempted the IGSO paper, they might be knowing that all the questions that was given, except that unfortunate incident of that question, all the question that was given, they were all simple. Each and every Sir. question was simple. हाँ बताइए। Sir, please do the last question. Yes. ये लीजिए। एक मिनट Sir, last. जस्ट ए मिनट। हाँ जी। सर इसमें ई के पास जो ए है, ई के पास जो ए है, हाँ, सर वो वाला एंगल, और जो उसके स्ट्रेट में जो एंगल ए है। ई के पास तो ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, और दूसरा कौन सा एंगल? सर इसके स्ट्रेट में जो ए है। ये वाला? यस सर। हाँ। सर इन दोनों का मेजर सेम होगा? क्यों सेम होगा? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? नहीं सर, क्योंकि दोनों ए है। What are you talking? This is the name of a vertex and this is the measurement of an angle. आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है? प्लीज बेटा ऐसी बातें मत करो। Even the 7th standard student knows more than this. Please, nobody should laugh. Even the 7th standard student knows more than this, my dear friend. This is A, this is a vertex. ये vertex है यहाँ पे. This is small a, this is the measurement of the angle. क्या बात कर रहे हो आप? थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर। नहीं ठीक है, आप क्या या तो मैं आपका कंफ्यूजन नहीं समझ पा रहा हूं, और अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप ये कहना चाहते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, बिकॉज हियर इट इज आल्सो रिटन ए, हियर इट इज आल्सो रिटन ए। यस सर। नो, तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग माय डियर फ्रेंड। दिस इज द नेम ऑफ ए वर्टेक्स। ये अपन ऐसे ए बी सी डी करते हैं, ये है ये, ठीक है, ये सर एंगल सॉल्व हो बी, गया। और यहाँ पे ये स्मॉल ए है, ये तो वैसे भी इक्वल नहीं होगा, ये ए का मेजरमेंट है, ठीक है। चल, now the next question is this one. Please solve this question. The time allotted for this question is 1 minute. Fast. क्या हुआ है तो उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे जो जो चीजें दी हुई हैं पहले उसको करो। पहला स्टेप while solving any question of geometry is to write the steps that you know that has been given. Then the next will be to infer the information that you can get from the question. उसके बाद कुछ इधर उधर की चीजें अप्लाई करो, प्लस माइनस करो, आंसर लो, आगे बढ़ो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि P is any point on the chord BC of a circle. बहुत अच्छी बात है सर। Such that AB is equal to AP. Very good. Now I have to prove that CP is equal to CQ. पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। Since AB is equal to AP, तो my dear friend, angle 1 will be equal to
कह सकता हूं मैं, क्योंकि AB is equal to AP, therefore it will form an isosceles triangle, और isosceles triangle में इक्वल एंगल्स के इक्वल साइड्स के सामने वाली जो 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 रेखा जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। therefore angle 1 will be equal to angle 2. now angle 2 will be equal to angle QPC. why, sir? Because this is vertically opposite angle. Because this is vertically opposite angle. ठीक है? Angle 2 will be equal to angle QPC because this is vertically opposite angle. अब ये तो इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई है वो हमने लिख लिया, एक इंफॉर्मेशन जो हमें दिख रही थी वो हमने लिख लिया, बट अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब देखो, सीपी को सीक्यू के इक्वल प्रूफ करना है, तो सीपी जो है वो सीक्यू के इक्वल तब कब प्रूफ होगा, जब by any measure I can prove that angle CQP will be equal to angle CPQ. If by any measure I am able to prove that angle CQP is equal to angle CPQ, मेरा काम बन जाता है। अब देखो, ध्यान से देखना, एंगल CQP जो है, एंगल CQP which is nothing but angle CQA, this angle has been made in the segment AC. ये जो एंगल है ये इस वाले सेगमेंट में बन रहा है, ठीक है सर। दूसरा एंगल ABC जो है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी इसी वाले सेगमेंट में बन रहा था, तो एंगल CQP will be equal to एंगल ABC will be equal to एंगल 1। तो ये वाला एंगल 1 हो गया, ये वाला एंगल 2 हो गया। एंगल 1 ऑलरेडी इक्वल था एंगल 2 के, देयरफॉर CQ is equal to CP, hence proved। Excuse हो me, गया? sir. यस सर, बोलिए। Sir, can you repeat again about the proving the angle CQP? CQP, see, angle CQP is nothing but angle CQA. Angle CQP is nothing but angle CQA, and this angle CQA is made on this segment AC. This angle CQA has been made on this angle AC, and similarly this angle ABC has also been made on this segment AC. And we have already studied one very important property, that angles made in the same segment are equal. Therefore, angle CQA will be equal to angle ABC, which I have assumed as angle 1. So angle CQP, so now angle CQA is equal to angle 1, and my angle CPQ was equal to angle 2, and I have already proved that angle 1 is equal to angle 2. Therefore, I can say that CQ is equal to CP. I hope I am clear now. I hope I am clear now. Yes, sir. हो गया था क्या बोल रहे बेटा? सर मैं मीटिंग से लेफ्ट हो गया था। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया होगा? नो सर। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताइए? सर अभी आपने लास्ट में जो कहा कि ये सर एंगल ए सी बी और एंगल क्यू सी बी, सर इसके बाद नहीं समझ आया। बेटा मैंने ना एंगल ACB का नाम लिया है, ना मैंने एंगल QCB का नाम लिया है। सिंस आप लेफ्ट हो गए थे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देखो। आप एक बार रिकॉर्डिंग देखो, अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर आप मेरे से बात करना, देन आई विल टेल यू। नीदर आई टॉक्ड अबाउट एंगल ACQ, neither I talked about the other angle that you were saying. So just watch the recording once. However, everything is written here only. Just watch the recording once. Even if you are not able to understand, then I will definitely tell you.
ठीक है. So this is so this was about the question. So thus we have discussed some of the important